Hello students, welcome to the class. So today I will discuss with you about this topic. Could there be other ways to bring a change? Yes, there is other ways to bring a change, that is expansion or contraction. So some material expand on heating and some contract on cooling. Heating makes the particle expand or become loose, and cooling makes the particle contract or become tight. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर पर ये ट्राई कर सकते हैं. नॉर्मल आइस को निकालिए, आइस को हीट कीजिए, आइस आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कन्वर्ट हो गई लिक्विड में. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन बिकॉज यू प्रोवाइड अ हीटिंग टू इट. और अगर आप उसको हीट और ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेज में, यानी कि वाटर वेपर्स में. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन. सो द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. इन गैसेज the expansion is the most, while in solid the expansion is least. Cooling does the opposite of heating. Cooling is completely opposite to the heating. Cooling causes a material to contract. Solid contract the least, and while gases contract the most. So this is all about. So yes, next is the expansion by heating can be used in several everyday activities. I will give you some example here. In your NCERT example are given, but I want to give you more example on that. Expansion by heating can be used in several everyday activities. For example, the jammed metal lid of a jam jar can be opened by heating. For example, कोई jam jar है, आप उसकी लिड ओपन नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको आप नॉर्मली हॉट वाटर में डिप करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद उसको ईजिली ओपन कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि देयर इज सम एक्सपेंशन इन द लिड. सो द जैम मेटल लिड ऑफ अ जैम जार कैन बी ओपन बाय हीटिंग. द जार इज इन्वर्टेड एंड जस्ट द लिड इज डिप्ड इन टू द हॉट वाटर. आफ्टर सम टाइम you will observe the lid can be opened easily as the lid gets slightly expanded. Also there is an example I want to discuss with you. One is thermometer, which we saw in our home also, in the real life situation also. The fact that material expand on heating is used in the thermometer. This is a fact that we use in the thermometer also. आपने देखा होगा टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मोमीटर, जो मरकरी होती है थर्मोमीटर के अंदर, उसका भी लेवल राइज होता है. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ heating expansion. So in many thermometer, mercury is used. When the bulb of a thermometer comes in contact with a hot object, the mercury expand and its level rises in the glass tube. That indicates the temperature. So this is the example I want to give you. I discuss with you what are reversible changes, what are irreversible changes. A change that can be reversed, it is reversible change. The change cannot be reversed, it is called as irreversible change. Also there is a physical change and a chemical change. What is physical change? A change where no new substance are formed. सपोज आपने देखा होगा, आपने आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हुआ? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. वाई? बिकॉज लिक्विड इट कन्वर्टेड इनटू गैसेज और वाटर वेपर्स. ऑल्सो देर इज अ केमिकल चेंज, अ चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंसेज with different properties are formed is called as a chemical change. So changes happen around us and also within us. So some changes are reversible, some changes are irreversible, and some changes are physical and some changes are chemical changes. Heating causes expansion in material, cooling causes contraction in material. Gases expand the most and solid expand the least. Gases contract the most and solid contract the least. So this is all about this chapter. This chapter finishes. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you. Have a nice day.